again, this is new math head class 6th. Read fractions. Write two equivalent fraction for each. Exercise 8.1 6th main. 8.1 6th main. Write two equivalent fractions for each. Two equivalent fraction for 3 by 7, 5 by 9, 10 by 11, 15 by 20. So, first we'll check what is the equivalent fraction. So, equivalent fraction means after simplification you have to get the same value. So multiplication करके भी कर सकते हैं, with the help of division also we can try. After simplification we have to get the same value. Look at here, this is the equivalent fraction 1 by 3, 2 by 6, 4 by 12, 8 by 24. So 1 by 3 is a base number, simplest form. So this we have to find the equivalent fraction means we have to multiply numerator and denominator. Up and down same number से multiply करना चाहिए. अप एंड डाउन सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमको इक्वलेंट फ्रैक्शन मिल सकता है. सो हियर आई थिंक इट इज़ मल्टीप्लाई विथ 2. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई हुआ है इंटू 2. सो 2 and 3 2s are 6. Again multiply with 2. This one again multiply with 2. 2 2s are 4, 6 2s are 12. And again this 2 multiply with 2 only. 4 2s are 8, 12 2s are 24. Or 1 2 4 8 and here 3 ones are tables. 3 2s are 6, 3 3s are that way also we can try. But simplify करने पे आपको 1 by 3 मिलना है. So better if you are multiplying 2 same double of that number. Double करना चाहिए. So best way is doubling number. 1 1 double 2 2 double 4 4 का double 8 3 का double 6 not square doubling 6 plus 6 12 12 plus 12 24. Okay, doubling number or each place multiply with up and down 2 से multiply 1 into 2 1 2s are 2 3 2s are 6 then again into 2 2 2s are 4 6 2s are 12 4 2s are 8 12 2s are 24. Okay, now look at this example. Write 4 equivalent fraction of 2 by 3 by multiplication. Multiplication से 2 by 3 का equivalent fraction find करना है. So what they did, they multiply 2 and 3. It is in a simplest form पे है. So they multiply with 2 and 3 into 2. Up and down with 2 2 only. Okay, up and down with 2. Then up and down with 3 4 5. Means टेबल्स सेम अप एंड डाउन न्यूमरेटर पे 2 पे मल्टीप्लाई हो तो डिनोमिनेटर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए. ओके 3 मीन्स हियर ऑल्सो 3 4 मीन्स 4 5 मीन्स 5 बोथ द प्लेस अप एंड डाउन सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए. ओके into 2 into 2 here 3 into 3 4 into 4 5 into 5. Multiplication is very easy. Equivalent fraction करने में base number is given, you have to multiply up and down with the same number. When base number is given, you have to multiply up and down same number. Now next here number is given 3 by, write the equivalent fraction for each 3 by 7. So we'll try with the multiplication. कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन से करना है डिवीजन से करना है. इट इज़ नॉट मेंशन बट सेकेंड क्वेश्चन इज मेंशन यूजिंग डिवीजन. सो हियर वी हैव टू ट्राई विथ डिवीजन ओनली. यहाँ पे डिवीजन से ही करना चाहिए एंड दिस साइड कुछ भी नहीं दिया हुआ है. सो इट मीन्स वी कैन ट्राई विथ मल्टीप्लिकेशन. सो हियर 6th standard fraction chapter 6th mean write 2 equivalent fractions for each. So 3 by 7 is given. 3 by 7 means अप एंड डाउन एक ही नंबर पे मल्टीप्लाई करना चाहिए. सो 3 by 7 वी हैव टू राइट द इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ दैट. इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखना चाहिए. सो व्हाट वी हैव टू डू, पहले ही लिखना है 3 by 7 एंड 3 by 7 लिखते हैं. ओके 3 by 7 3 by 7 लिखते हैं एंड अप एंड डाउन विद द सेम नंबर. सो फर्स्ट आई विल मल्टीप्लाई विथ 2 देन आई विल मल्टीप्लाई विथ 3 into 2 into. Now write the 2 equivalent fraction for each 3 by 7. Okay, equal 3 into 2 7 into 2. Then base number this one 3 by 7 3 by 7. First multiply with 2 up and down and multiply with 3 number. 2 number is enough, no? So now 3 2s are how much? 3 2s are 6 by 7 2s are 14 equal 3 3s are 9
by 7 3 is 21 and 3 by 7. This is our equivalent fraction. Equivalent fraction 3 by 7 up and down same number पे multiply करना चाहिए. Here we can multiply any number. हाँ 10 भी multiply कर सकते हैं into 10 into 10 into 100 into 100 into 1000 into 1000 any number, so we get the different answer also. यहाँ पे आपको 10 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1000 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. रीज़न इज अप एंड डाउन सेम चॉकलेट ही देना चाहिए. दोनों को अप एंड डाउन सेम ही चॉकलेट देना चाहिए. 2 न्यूमरेटर को 2 दिया तो 7 को भी, डिनोमिनेटर को भी 2 ही देना चाहिए, अदरवाइज दे विल फाइट. Next we'll verify whether our answer is correct or not. Verification whether our answer is correct or not. So simplification after simplifying we have to get the base number 3 by 7. So here we'll try the verification of a number. Verification करेंगे. Okay. Verification means 3 by 7 is given. Now next is 6 by 14. Then 9 by 21. This is our new number. 6 by 49, 9 by 21 new number. This number is correct or wrong? Verify करेंगे. Okay, this number is correct or wrong? We are verifying. So simplify means cancel with the same number. Cancel with the same tables. Cancel with the same table. After simplification you have to get 3 by 7. So 2 3s are 6, 2 7s are 14, 3 3s are 9, 3 7s are 21. Okay, so simplify करने पे हमको बेस नंबर ही मिला है 3 by 7. So okay, we can multiply with 5 both the number 6 any number different number पे कर सकते हैं ना. different numbers पे करने से भी हमको different आंसर मिल सकता है. सो वेरीफाई कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग द आंसर 6 by 14, 9 by 21 इज करेक्ट और रॉन्ग. जस्ट कैंसिल विद द सेम नंबर पे कैंसिल करो, तब हमको बेस नंबर 3 by 7 सिंपलेस्ट फॉर्म पे मिल रहा है, तो दैट इज अ करेक्ट आंसर. 5 by 9. 5 by 9 we have to write the equivalent fraction for that. 5 by 9 को equivalent fraction लिखना चाहिए. So what is the first step? So we'll write 5 by 9. 5 by 9 लिखते हैं. 5 by 9, 5 by 9. So this is in simplest form. ये simplest form है. अभी ऐसे एक ही नंबर पे कैंसिल नहीं कर सकते. Okay, so this is in simplest. Now we have to write the इक्वलेंट फ्रैक्शन. इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखना है. इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए सो वी हैव टू मल्टीप्लाई अप एंड डाउन सेम टेबल्स सेम नंबर्स. दोनों को एक ही चॉकलेट देके करना है. सो फर्स्ट सिंपली विल मल्टीप्लाई 2 2. अभी दोनों को एक ही चॉकलेट, ऑलरेडी 2 इज़ डन. 3 लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. बट रूल्स इज दो अप एंड डाउन एक ही टाइप का चॉकलेट देना चाहिए. different यहाँ पे 3 and here 4 we can't write, here 2 here 3 we can't write. Okay, this here multiply with 2 and down 3 पे multiply नहीं कर सकते, this is a wrong. So equivalent fraction के लिए multiplication पे up and down same number, any number लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7, but rules is up and down same number. Okay, so answer is 5 into 2, 5 2s are 10 by 9 2s are 18 equal 5 3s are 15 27. Then here 5 by 9. This is our answer. Equivalent fraction का answer है. Okay, this is our answer. Equivalent fraction 5 by 2 multiply with 2, so 5 2s are 10, 9 2s are 18, 5 3s are 15, 9 3s are 27. Whether our answer is correct, just simplifying 5 10 and 18. 2 5s are 9. If I cancel with both, we get 2 5s are 9, 2 9s are 18. Cancel कर सकते हैं. Then 3 5s are 15, 3 9s are 27. Cancel करके 3 5s are. So after simplifying, we getting 5 by 9, 5 by 9. That is the main important. 5 by 9, 5 by 9. Cancel करके reducing value. That is verification. Okay, first sum पे verification किया हुआ है. 5 2 5 2s 2 5s are 2 9s are, so 5 by 9 बेस मिलते हैं.
देन 3 5 3 9 कैंसिल करने पे भी 5/9 बेस मिल सकते हैं. ओके, 10/18, 15/27. We'll check our, this is a verification. 2 5s are 9, 2 9s are 18, 2 3 5s are 15, 3 9s are 27. 5/9, 5/9. So 5/9 base मिलने से it means our answer is correct. It is not necessary to do it is not necessary to do this one. So only till here is your answer. Next question is 10/11. 10/11 we have to write in a equivalent fraction. So equivalent fraction means 10/11. Same base number 10/11. 10/11 in simplest form पे है. Simplest form means we can't multiply with the same number, co-prime number. Okay. Now we'll multiply with both the side 2 and 2 or 5 and 5 into 10. कुछ भी लिख सकते हैं. 5 and 10 कुछ भी लिख सकते हैं. So that is also correct answer. कुछ भी लिख. So I am writing 10 into 2, 11 into 2, 10 into 3, 11 into 3, 10 2s are 20, 11 2s are 22, 10 3s are 30, 11 3s are 33, and 10/11. This is the equivalent fraction answer. So 10/11, for example, 20/22 and 30/33 is our new answer. Verification. This is a verification. Okay, till here is enough. This is the answer. Now 11 10 2s are 2 1s are 2 11s are 3 10s are 3 11s are. So after simplifying we getting this answer only. Okay, अभी 5 भी लिख सकते हैं. 10 5s are 50, 11 5s are 55 भी लिख सकते हैं, and 10 10s are 100, 11 10s are. रीज़न न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक ही चॉकलेट, सेम चॉकलेट ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. डिफरेंट वेराइटी चॉकलेट नहीं देना है. फोर्थ वन 15/20. सो आई रिटर्न 15/20, 15/20 लिखा है. अभी यहाँ पे 2 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, सेम नंबर अप एंड डाउन. There is a rules. Okay, so 15/20, 15/20. Now 15 2s are 30, 20 2s are 40, 30 40, 15 3s are 45, and 20 3s are 60. Okay, this is the equivalent fraction answer. 15 into 2 30, 20 into 2 40, 15 into 3 45, 20 into 3 60. So this is the answer.